Yeah, recording started. This this was the position. Sir, I have a question. Yes, beta. Sir, in that isolated move, only pawn is included or any other piece is also included? Only pawn. Only pawn. Only pawn. Isolated pawn. Whenever the pawn is alone, उसके आजू बाजू के कोई pawn ने उसका साथ छोड़ दिया, तो उसे isolated pawn बोलते हैं. Islands. We can also say as an island. अभी यहाँ पर आपको पीस विन करना है. विनिंग अ पीस कैसे विन करोगे? क्योंकि वो विन करने के बाद आपको जीतना बहुत आसान हो जाएगा और कुछ नहीं. Can anybody? Sir, pawn to Shall I- G3. Pawn to G3. On to G3. This will go back. That's all. Or even instead of going back, you go over here. This cannot go here, cannot go here, cannot go here, not here, not here, not here. Only can go here only. यहाँ पर जा सकता है या यहाँ पर जा सकता है या यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है. और यहाँ पर आ गया तो ये वापस इसके ऊपर ऐसे अटैक करेंगे. यहाँ जाएगा तो Sir, can that knight move to? this is the position. This is the position. Sir. Yes, tell me. Sir, can that knight move to here? Where? D5. 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 Absolutely perfect move. उर्वी क्या Yes, खा के sir. आई है? क्या खा के आई है? करेक्ट मूव बताया. हाँ. कौन से मंदिर में जाके आई? This is the right move. See here, this knight is giving fork to queen and rook and this. So out of this is not so important because 3 points and 3 points. तो exchange अगर हुआ तो दोनों को कुछ फायदा नहीं है. उल्टा ये पॉन यहाँ पर आएगा और ये दोनों पॉन एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएंगे तो आइसोलेशन टूट जाएगा. इट इज बेनिफिट ऑफ द व्हाइट. अभी क्वीन को बचाने को जाए तो ये जाएगा. ये तो 5 पॉइंट्स है. सो यू आर विनिंग हियर, एक्सचेंज विन. और इसको बचाने के लिए जाएंगे तो क्वीन जाएगा. तो कोई भी क्वीन बचाने के लिए जाएगा. बट हियर ब्लैक सेज दैट मैं ये और ये दोनों बचाने के लिए मेरे पास पॉन है. सो आई विल kill with the pawn and save. Then why I say this is a good move? Because see this what happens. Check. Now what is the transaction? Lost 3 points, that is knight, and one point. Okay, 2 point अभी भी नीचे है लेकिन there is an attack. There is an attack. How can it be saved?
both cannot be saved. So this has to come over here forced, or you can come over here, whatever you want, and then next move this. So how many points we got? White got 5 points plus 1, 6 points. And how many points lost? 3 points. So total profit is 3 points, and 3 points equal to 1 piece. And 1 piece means you are 1 piece ahead. Who will win? White will win. So this is how you attacked and won the piece. Initially, when we saw the position was equal. But by sacrificing your knight, you sacrificed. You got 3 more extra points. That is almost a piece. Calculate 5 plus 5 plus 3. यहाँ पर 3 plus 3 plus 5. और pawn तो एक ज्यादा है अभी, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है. So naturally, who will win? Whatever black plays later on. Black can play this, threatening this. This will simply save. That's all. Nothing will happen. Yes. If this comes now, attacking this, then this will come. क्योंकि इसने ये मारा तो ये मरते हैं. तो फिर ये खुद को पहले बचाएगा. कहाँ जाएगा ये? यहाँ जाएगा. तो यही जाएगा ना. ये मारेगा तो ये मरेगा. So ultimately you are 1 piece ahead. That is 100%. You understood this? We will move for next problem. Let us see what that problem offers us. Yeah. Black to play and win. तो व्हाइट के पास एक्सचेंज अप है और ब्लैक के पास 2 पॉन्स है. So position is equal point wise. You calculate the point. Both the sides are having equal points. Sir, exchange up means... नहीं 1 2 3. Sorry, white is up. White is 1 piece up entirely. Exchange up means rook against any minor piece. It is called as exchange up. रुक को 5 पॉइंट है और माइनर पीस को 3 पॉइंट है. तो अगर आपने रुक के अगेंस्ट नाइट या रुक के अगेंस्ट बिशप अगर ऐसा एक्सचेंज हुआ है तो जिसको रुक मिला वो अप होता है और जिसका रुक गया वो डाउन होता है. तो एक्सचेंज तो हो गया एक दूसरे के साथ, लेकिन वो एक्सचेंज अप या एक्सचेंज डाउन कहलाता है. यहाँ पर तो व्हाइट के पास पूरा रुक जाता है, पूरा रुक, और पॉन्स में 2 पॉन कम है. दैट मींस 3 पॉइंट्स अहेड. 3 Sir, I पॉइंट्स did अहेड. not understand exchange up and down. डोंट वरी, वो बाद में बताता हूँ. अभी यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स जो है ना, ये प्रॉब्लम डोंट वरी. अभी यहाँ पर अपने को ब्लैक टू प्ले है. अभी ब्लैक इतना पीछे है तो उसको आगे आना है, इक्वल करना है. या तो इक्वल करेगा, ड्रॉ करेगा, या तो विन करेगा.
ब्लैक क्या खेलेगा कि वो इक्वल कर सकता है खुद को, या ड्रॉ कर सकता है, या जीत सकता है. Sir, he has to sacrifice his pieces. Not necessary. But a very simple move. Here the double attack is there. Can you see there is a double attack? See, Sir, which? this piece, queen is attacking this, and this is also attacking this. So एक दो पीसेस एक ही पीस के ऊपर अटैक तो कर रहे हैं. ऑलरेडी डबल अटैक इज देयर एज पर आवर कंसेप्ट. लेकिन यहाँ पर देखो आप, अगर क्वीन ने पहले मार दिया तो ये मारेगा वापस, इसने मार दिया वापस, तो होगा क्या, दो रुक तो जाएंगे, दो रुक किसके, व्हाइट के जाएंगे, लेकिन ब्लैक का भी क्वीन है ना, ब्लैक का क्वीन जाएगा ना. लेकिन 5 + 5 10 रहता है. करेक्ट, 5 तो + 5 क्वीन 10 गया रहता है. तो 10 जाएगा. करेक्ट, वेरी गुड, यू आर राइट. बट द थिंग इज दैट व्हाइट के पास क्वीन बचेगा ना, लेकिन व्हाइट के पास क्वीन बचेगा तो क्वीन तो बहुत स्ट्रांग है ना, क्वीन व्हाइट जीतेगा. फिर ये दो रुक के साथ अगर एक्सचेंज हो गया ये, तो इट इज इक्वल, राइट. बट पोजीशन ऐसा है कि अगर ऐसे वक्त पर क्वीन गया तो व्हाइट का क्वीन तो बाकी के सबको आराम से निकाल देगा. सो डबल अटैक का कंसेप्ट जो मैंने अभी सिखाया, हम लोगों ने दो क्वेश्चंस ले लिए स्टार्टिंग में कि दो जन अटैक कर रहे हैं एक के ऊपर, वही कंसेप्ट है यहाँ पर, लेकिन वो आपको यूटिलाइज करने को आना चाहिए. Sir, you have to tell the answer. You have to yeah, tell tell me. Yeah, you have to tell me the answer. There are two different answers to this Sir, question. which side to play? Black to play. Black पीछे है अभी. Sir, I know, sir, I know. Yes, बोलो बेटा. Sir, queen to, is that C? C2. Queen to C2. Are you sure? Queen to C2. ये मारेगा ना. Queen to C2 is not correct. Yes. Sir, queen Yes. to F4. Absolutely right, विनीत. वाओ, विनीत को समझ में आ गया. ओके, चेक. ये चेक में नीचे गया. अभी क्या करेगा? क्यों नीचे बोल रहा हूं मैं बताता हूँ. ये बीच में नहीं आ सकता है, पॉन मारेगा इसको. ओके, ये यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता. तो एक ही जगह है जहां पर आ गया. अभी नेक्स्ट मूव क्या करेगा? Sir, you have to bring that queen down. Sir, No. Yes, Vinit. Yes, Vinit. sir, I will cut the rook with my rook. Perfect. Very good. Because there are double attack. See, one attack and two attack. Two attacks on one piece. And only one support. So naturally rook will take rook. Then this takes this. Then this takes this. Check. Again. And this check. If this comes over here or this comes down, whatever, you get this also. Now see who is winning. Entire position has been changed. But sir, Just by one check. Yes, beta. But sir, if black takes every pieces, then it will not become draw game. No, because if black takes every piece and black is not losing his pieces, how it can be a draw? Draw will be then, it happens when both of the parties loses their pieces. In exchange, queen के बदले में queen, rook के बदले में rook.
इक्वल पीसेस अगर एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज मीन्स व्हाट, गिव एंड टेक ना, समथिंग, कुछ देके कुछ मिलता है, तो जब एक्सचेंज होता है पीस के बदले में पीस, तो दोनों के पास पीस नहीं बचेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा बेटा। अभी तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन एक्सचेंज में क्या हो रहा है, ब्लैक को ज्यादा मिल रहा है और ब्लैक का कम जा रहा है, तो ब्लैक विल विन। ब्लैक को 2 रूक मिल गए, सॉरी 2 रूक मिल गए प्लस ये मिल गया, नाइट मिल गया, और ब्लैक का गया क्या, सिर्फ 1 रूक। यू अंडरस्टूड? सो परफेक्ट ना विनीत, वेरी गुड, यू गॉट इट। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी अभी ये प्रॉब्लम्स, डबल अटैक का प्रॉब्लम्स आ रहा है अभी, बराबर। वी विल सी अनदर प्रॉब्लम। White to play. अभी यहाँ पर पोजीशन तो वैसे इक्वल है, व्हाइट के पास एक पॉन ज्यादा है, ब्लैक के पास भी क्या है, ब्लैक का ये जा रहा है यहाँ पर, पास So पॉन, what वी to सेड पास play? पॉन, व्हाइट टू प्ले एंड विन। Sir, यस, sir, to sir, to block that what you call pawn. Sir, the rook. Rook should come at a8, I think. block the pawn, rook should come at a8. If you come over here, block for blocking the pawn, very good. This will come over here, then this will kill, and then this will kill, position remains equal. So this is not a winning. Winning is something different. Let us see. Sir, the rook to e8. Rook to e8. Okay. If this comes, very good. Rook to e8. ये यहाँ पर है, सॉरी। Who said this? Aryan Gore. Aryan, do you know you have given the correct answer? Sir, I know. Okay, what black will play now? Supposing black plays this now. What will white play now? Aryan, you have to tell me now.
If black plays this from here to here, what white will play? I said this move is right. Now you prove it, why it is right. Sir, Yes. sir, cut the knight with the bishop. Cut the knight with the bishop. No, that is wrong. You will cut this. Then Sir, you cut this. Yeah, then he cut this. Then you cut this. Still it is almost draw position. Yeah. Anybody? There are not much options for black. Huh? Black has to do this. If black doesn't do this and black does this, then naturally white will do this. Got it? And then this cannot kill. This cannot kill. I will show you how. See, if this comes over here or he does this, whatever, he comes over here, then he has to kill because next move is queen. So he has to kill this. Then what will happen? Black will lose this. Not with the bishop, but with the rook. Now, if he kills, the bishop will kill. correct, check. This will go back or this will go over here and then gone. But still again, this will come and who will stop? So we have to see some another answer basically. But this is what is the idea. This is here. This is here. This is here. This is here. Right? This is here and this is here. This is the problem. Now, Aryan said this over here. And I said instead of that, this is the correct move. This is the correct move. Now, why? I will show you. Because earlier Aryan's move, no? Aryan's move gives chance this to push. And then 1 and 2 immediately this queen also will be there. So not to give the chance, this is the right move. Why? Sir, because the rook can't kill the pawn because it has support from the white rook. Correct, correct. Now what black will play? Black has options of either killing this or has option of coming over here. See, this is important move. I will tell you why. This is what you have to learn something new. Okay, you have to remember this. Whenever your pawn is reaching last line, any pawn is reaching last line, so your opponent is defending, right? The opponent don't want you to reach last, and you are also protecting your pawn. When this particular thing happens, now this situation, just see, if you move this, this will kill. So if you move your support, this will get killed. And if you don't move your support, how this pawn can reach? This is the dilemma. This is the problem. And to overcome the problem, a usual technique utilized is
After this position, this goes and give the check. Now there is no support. Agree. But check means what? Opponent doesn't get time to kill this. Opponent has to kill this, and then this can go easily over there and queen. That is why when white pushed, black now has to protect his king, because there should not be any check. क्योंकि ये रुक को बाहर निकालने के लिए एक सोचेगा कहाँ मैं निकाल सकता हूँ. अभी तो चेक नहीं दे सकता ना कहीं भी. ये पॉन नहीं रहता तो चेक दे सकता है, लेकिन ये पॉन के आड़ छुप गया. दिस इज कंपल्सरी फोर्स्ड मूव. आफ्टर दिस मूव you got it. No other move black can play. No other move. Even you can think black can play this, but still check is there, and then queen. So that is also not possible. So black has to play this. Now what black will play? White will play. Now white will still play this, attacking this and attacking this. अभी ब्लैक को वापस ये फोर्स्ड मूव है. दिस इज अ फोर्स्ड मूव. नहीं तो नेक्स्ट मूव क्वीन. सो ब्लैक kills this and you kill this. Kills this, check. This cannot come over here, not over here. This has to go over here. This. Then this will come over here. Then this will come. No, sorry, this can't come over here. This will come over here. Then check. This will come and then this to stop and wins. White wins. This was little complicated problem. Attack and all, everything. But you learn this particular concept. Whenever your pawn is reaching and you are supporting, this is a support, and somebody is attacking from behind. Whenever comes, whatever comes, yeah, it goes. Ultimately, you have to remove your support. And once you remove your support, the attacker will kill. Sir, but there was a check. No, ये तो मैं दिखा रहा हूँ बेटा. ये तो ऐसे है, पकड़ के चलो, ऐसे है करके. Don't worry. ये सब इग्नोर करो. Just look at this only. Yeah, this is the position. Supposing. तो कैसे इसको ये आगे जाएगा तो इसको मारेगा ही नहीं. ये जैसे ही ये बाजू में आएगा तो इसको ये मारेगा ही. तो ये बाजू में कैसे आता है? चेक देखिए, चेक दे दिया तो इसको राजा को बचाना पड़ता है, और बाद में इसके ही सपोर्ट से वो विन हो जाता है. यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट यू लर्न टुडे. अगर आपका पॉन जा रहा है तो उसको सपोर्ट तो आपको करना है. और हमेशा देखो, हमेशा सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट अपने पीस को पीछे के रैंक से करना है, ना कि ये जा रहा है तो मैं यहां से सपोर्ट करूंगा. तो डिफेंडर वेरी इजीली इसको स्टॉप कर सकता है. कहीं भी कोई भी आके यहाँ से स्टॉप कर सकता है, ये भी आके स्टॉप कर सकता है. लेकिन सपोर्ट अगर अपना पीछे से रहेगा ना, तो nobody can stop you because you are ready to kill ना. all these squares are under your support, under your own attack. So nobody can come in between and stop the journey. And that is why always and always go from back behind and support your pawn's advancement. And what opponent has to do? Opponent has to come from other side and then attack always. These are the small things
practical things. When you start playing, you will get benefit of this knowledge, okay, how to do it, why to do it, and all. So this particular section, this what we were looking is double attack. This book has not yet explained very much properly. I will find out some more good problems for tomorrow. Tomorrow we have class, na? Yeah. So tomorrow, good problems I will select and I will give you to explain this double attack. Very clear? Till now, Okay, anything? sir. Yeah. From today's session, if you haven't understood anything, you can ask me. Vinith, Aryan, Trupti, Parth, nothing? Tomorrow I will come with some good problems. This problem was very difficult. The one which we saw it, na, it was really tough. ये तो आगे के मेरे intermediate batch में भी शायद उनको पता नहीं चलेगा ये problem. But I will see that and I will select appropriate problems for your benefit. Not this much tougher one. Okay then. Bye bye. Bye, sir. Yeah. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir.